this very university, Dr. M.V. Chetty, present Vice Chancellor of Sanskrit University, Mathura, and former Vice Chancellor of this very university, Dr. N.S. Rathore, ex-DDG of ICR New Delhi and Vice Chancellor of Udaipur University. My very close friend, Shri Dinesh Ji Kulkarni, National Secretary, Organizing Secretary of Bharatiya Kisan Sangh, Dr. G.S. Hiri, the convener of this whole conference, honorable members of the Board of Management of this university, my old colleague and very close friend, Dr. Vishwanatha, Dr. other members who are in the audience, seated off the dais. Friends, I am very fortunate to be amongst you this fine morning. As you know, I usually start with the prayer of the God and then I spell the subject. So one line I will say in the prayer of the God and then I will come to the subject. Charan kamal bando hari rai, charan kamal bando hari rai, jaki kripa pangu girilang hai, jaki kripa पंगु गिरिलं है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल वंदो हरि राई. Friends, Dr. Chetty has already explained the whole background. Basic thing which was coming to my mind several times was the climate change which is affecting the whole mankind now. Up till now people were feeling that climate change is okay, it is the fancy of the scientists. But as Dr. Chetty told, it is not only 10 years last, but maybe around 50 years or so, there are the effect of the climate change which can be noticed very easily. I remember while I was a student of BSc, at that time we were told that the CO2 concentration of the atmosphere is around 300 to 360 ppm parts per million. Sir, today if you talk of the carbon dioxide concentration in the atmosphere, it is around 440 to 450 ppm. That is so much carbon dioxide has been added to the atmosphere. Sir, our atmosphere is almost 20 km from the ground and extended, rarefied atmosphere extended up to 200 km. The 20 km atmosphere around the earth, it is made up of different gases, mainly nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors, other trace gases and some dust particles. The important CO2 is from the point of view
that what happens that when the radiations are coming through the atmosphere, since they are the shortwave radiations, they can pass through the atmosphere easily. But when they strike the Earth's surface, then from Earth's surface gets heated, atmosphere gets heated, and instead of short wave radiations, long wave radiations are emitted. And when these long wave radiations are passing through the atmosphere, they cannot pass through the window through which CO2 doesn't allow them. And therefore, all the long wave radiations, or you can say the infrared radiations or the heat radiations, they remain trapped on the earth and atmospheric system, and therefore heating effect is there. Sir, if you remember, the average temperature of the earth was supposed to be 19 degree to 20 degree Celsius. Now, if you read the IPCC report, that is International Panel on Climate Change, the temperature has increased by 0.8 degrees Celsius. And with this speed, it go on increasing. Most likely, in the next few years, it may go up to 1.5 degrees Celsius. The recent conference, which was CR27, held at Egypt in last few weeks, there also it has been discussed at length that how to control and check the heating of the atmosphere. What are the effects of heating of the atmosphere? You can notice the major effect the earth is having on the North Pole side, the whole ice, and on the south side it is Antarctica. So this is Arctic and this is Antarctic. Previously, Arctic was also totally snow, but because of the heating of the atmosphere, it has started melting, and melting to such an extent that now on the North Pole side there is the oceans. And if somebody wants to navigate from Japan to England, he need not to go through Indian Ocean, but through the top, through the Arctic Ocean side, they can travel, and they will be traveling a distance 16,000 kilometers less than the earlier route. That is, so much is the melting on the upper side that because of that melting, whole ocean is there, and navigation has become easier to go instead of south side to go from the north side. This is all about the Arctic. If you talk of the Antarctica, the whole glacier, the Antarctica was complete sea, complete ice. It has been melting 16 to 20 kilometers inside, and the depth of glacier is to the extent of again 15 to 20 kilometers. Such a big glaciers, they are melting and adding the layer of the ocean. It is increasing the ocean surface. Sir, change is very predominant if you notice that even in cities like Pune, there is the cloud burst. The cloud burst phenomena which we hardly heard. First time we heard that there is a cloud burst, and because of that cloud burst at Kedarnath, Modi ji has sent the people that okay, you go and pick up Gujarati people. But now the cloud burst is taking place even in Pune, and not once or twice, in one season, 3, 4, 5 times. Sir, the temperature of Europe has increased to such an extent that England, France, Germany, all these countries, they have started realizing that what is heat, what is the how temperature. So nowadays it has become very important to study the climate change, and climate change is affecting not only the physical comfort, but maximum it is affecting our agriculture. Because of whole climate change, agriculture is worst affected. Sir,
हम लोग जब सिखाते एज ए प्रोफेसर तो हम लोग हमेशा यही सिखाते हैं कि जो भी हमारे रेफरेंसेस हैं हम पीएचडी के स्टूडेंट्स को देते हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स को देते हैं, और वो स्टूडेंट्स पिछले 10 या 15 साल के जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको देख करके और रेफरेंस करके और थीसिस तैयार करते। कभी भी मेरे देखने में आज मैं लगभग 30 साल से पीएचडी की थीसिस चेक कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, या एमएससी की थीसिस गाइड कर रहा हूँ, पीएचडी की थीसिस गाइड कर रहा हूँ। Amongst those 35 to 40 years, I have never come across a thesis in which the Indian references are given. No, where the reference of Chanakya has come. No, where the reference of Krishi Parashar has come. No, where the reference of Varamir has come. Probably my younger friends, they may not even heard the name of Yagyavalk or Vaishampayan, that what was the rishis and what were they doing. Our students, our professors, they never refer anything of scientists who were Indian, to whom we call Rishi, Maharshi. They have worked in agriculture. Friends, I very proudly say that to whole world, agriculture has been taught by us, by India. Whatever was the mankind at that time, they were hunting, and from that hunting, they were eating and feeding themselves and their families. It is India who has given them complete technology of agriculture. Sir, in Rig Veda, which is the first text of the mankind, in Rig Veda, there is a reference of agriculture. If you go further, there are number of rishis who have worked in agriculture and given the text. I think some of you might have heard the name of Rishi Aruni. I think Dr. N.S. Rathore, who is from engineering side, he must have heard that first person who did the compartment bunding, that was Rishi Aruni. The story goes like this, that Dhome Rishi was there, and under his disciples Aruni was there. So they were doing the farming, and in that farming they were doing the different type of the bunding. In their farm they did the compartment bunding, and rainfall started. While there was a severe rain, because of that rain, then in the evening Dhome Rishi called Aruni and asked him that you go to the farm and see that compartment bunding which we have done, probably because of the excess water it may wash off, and if it is washed off, the whole crop will go. It is said that Aruni gone, Aruni checked there, and after some time when Dhome Rishi thought that he should have come back, he didn't come. Whole night passed. Dhome Rishi was restless in his bed, that what happened, why Aruni has not come back. So in morning immediately he called all the other Shishya, and with the lamps and lights and mashal he gone to the farm. He saw that on the farm at one side where the bunding was to wash off, there Aruni is lying himself. He has given the support from his back because he was trying to put the soil there, but soil was not staying. So he himself laid there, and when he himself laid, the water stayed or water is stored in that compartment, but he was senseless. He lost his conscience. Dhome Rishi took him, and then he has given the whole treatment to him, and he became alive. So, sir, as far as the plowing is concerned, ridges and furrow is concerned, the broad base and ridges are concerned, such type of the technologies were given by our forefathers long back. And that compartment bunding, that ridges and furrow, these were taught by Aruni to Rishi Yagyavalk. Again, Yagyavalk was also a very known Rishi. His father was a Rishi, and he learned under his maternal uncle, Mama. Mama was Vaishampayan. Under Vaishampayan he took lot of lessons, but ultimately there was a difference between the two, and because of that difference,
The Yajnavalk left Vaishampayan's ashram, came back, and then he has worshipped Surya, sun. And after worshipping sun, sun gave him all knowledge of not only agriculture but of Vedas, Shastras, etc. Therefore, the Yajnavalk has given so many things. In Yajnavalk Smriti, Taitri Upanishad, there are number of shlokas which are telling about the agriculture in India. So, friends, it is the whole agricultural technology which we have given to the world. I think it will be incomplete if I don't tell you about the Krishi Parashar. Krishi Parashar, Maharshi Parashar, he was the son of Shakti. Rishi Shakti was there, and his father was Vashisht Muni. That is the from Ayodhya or from Raja Dasharatha's hierarchy. Vashisht Muni was there. He was his school guru. His son was Shakti, and Shakti's son was Parasar. I think all of you must have heard the name of Vyas. Maharshi Vyas was the son of Maharshi Parashar. In his Krishi Parashar, he has described the cultivation of rice completely from nursery up to harvest. All growth stages has been described, all type of the farm operations has been described by Krishi Parashar. Up to that, after threshing, to pack it and then to market it, even the technology of marketing was taught by Krishi Parashar, by Rishi Parashar in his Krishi Parashar Atsar. Sir, while I became the Vice Chancellor of Anand Agricultural University, I renovated my bungalow, and after renovating that bungalow, I gave it the name Krishi Parashar. So that my students should know that yes, the rice, the major cereal crop, it was given by our rishis and we had given it to whole mankind. I think most of you must be knowing that rice, the Latin name is Oryza sativa dot indica. Extension name is indica, which indicates that it originated from India. Then from India it traveled to Indonesia, and in Indonesia some varieties were added, and those varieties were named as Oryza sativa javanica. And from Indonesia again it traveled northward. It reached to Japan, some more varieties were added, and those varieties were named as Oryza sativa japonica. From there it went to China, Korea and all other parts. So, rice cultivation has spread from us to whole world. Not only rice, sir, sugarcane, cotton, many fruits and vegetables. Mango is very well known to you. Mango is our crop which we have given to the whole world. Amongst the vegetables, most popular, brinjal, wangi. That wangi is our crop we have given to whole. Lauki, then karela. All these things, these vegetables, they were given by us to the whole mankind. Therefore, agriculture was the thing, agriculture was the technology which we taught to the whole world. हमें दुनिया विश्वगुरु मानती थी वो इसलिए नहीं कि हमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता था या हमको इंजीनियरिंग साइड बहुत अच्छी आती थी. सर, दुनिया हमें विश्वगुरु इसलिए मानती थी कि दुनिया को हमने कॉटन कल्टीवेशन सिखाया. कॉटन का जो फाइबर है उससे हमने धागा बनाना सिखाया, धागे से कपड़ा बनाना सिखाया, और उस कपड़े से हमने सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाई. और उन सुंदर ड्रेसेस में फिर जो छपाई का काम है, सुंदर सुंदर प्रिंट्स हैं, बेल बूटे हैं, इवन जो सिल्क के कपड़े रहते हैं उन सिल्क के कपड़ों में सोने का और चांदी का तार डालना और उस तार की सुंदर कढ़ाई करना, ये सब हमने दुनिया को सिखाया. आप सबने सुना होगा कि जो ढाके की मलमल थी वो इतनी अच्छी होती थी कि ब्रिटिश फैमिली जो थी, ब्रिटिश रॉयल्टी जो थी, वो ब्रिटिश रॉयल्टी उनके यहाँ के कपड़े पहनना पसंद नहीं करती थी. दे यूज्ड टू get the imported fiber or imported textile from India. That they will. Only to make the India poor, they cut the thumb of the
workers or weavers who were doing the weaving work in Dhaka, so that ultimately the Britishers should wear their cloth manufactured by them. Sir, during those days, the contribution of agriculture in global trade, it was to the extent of 85%. You can say that in real sense, whatever global trade was there, it was from us. And today, do you know how much we are having the share in global trade? Sir, our share in global trade is less than 1%. We are having such a low share today. But once upon a time, the whole trade was our trade. So, I always wonder, as a vice chancellor, as a scientist, as a guide, that why my students are not giving the references of our texts, of our scientists, of our rishis, of our textbooks. The major reason is that people are referring only the Western literature which has been given to them by their guides, by their library and so on. Sir, the Panch Mahabhuta, the whole origin came कि पंच महाभूत है क्या? मेरे ख्याल से आप सबने केमिस्ट्री में जो पढ़ा होगा, हमारे पाटिल साहब ने, जब उन्होंने फर्स्ट ईयर के क्लासेस लिए होंगे, फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के, तब उन्होंने सिखाया होगा कि मेंडलीफ टेबल होती है और मेंडलीफ टेबल में एलिमेंट्स रहते हैं और उसमें से पहले 93 एलिमेंट्स थे, बाद में 104 हुए, अब 115 एलिमेंट्स होते हैं. सर, ये तो सारे के सारे एटम और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मेटल्स के हैं. जो बेसिकली एलिमेंट्स हैं वो तो केवल 5 ही एलिमेंट हैं, इनको हम पंच महाभूत कहते हैं. मतलब स्काई, ये जो स्काई है इट इज ऑल परवेडिंग, सब और फैला हुआ है. चाहे वो पृथ्वी है, पेड़ है, खेती है, पहाड़ है, झरने हैं, नदियां हैं, समुद्र है, आकाश है. ये आकाश सब और ऑल परवेडिंग. आकाश जो है वो छूने से पता नहीं लगता, सुगंधि नहीं देता. यानी आकाश के गुणों में एक ही गुण है और वो है आवाज, साउंड. आवाज, आकाश जो है वो केवल साउंड, आवाज या ध्वनि, ये उसका गुण है. उस आकाश से वायु बनी और वायु जो थी उसमें बाकी तो और गुणों की बात छोड़े, स्पर्श का सबसे बड़ा गुण. हवा चलती है तो हमको महसूस होता है कि हाँ हवा चल रही. हवा से अग्नि बनी और अग्नि का जो सबसे बड़ा गुण है वो है तेज. और वह तेज 2 प्रकार के इफेक्ट देता है. हमको हीटिंग का भी इफेक्ट देता है और साथ में पत्ती के ऊपर गिरा, पेड़ के ऊपर गिरा तो उसमें फोटोसिंथेसिस होती है और उस फोटोसिंथेसिस से पदार्थ बनता है. मतलब ये जितने भी पदार्थ बने हैं वह सब फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश से बने, प्रकाश से जल आया. और जल में तो जो भी प्रोकैरियोटिक है या यूरोकैरियोटिक्स हैं, ये सब सिंगल सेल एलिमेंट्स, अमीबा, ये सब इकट्ठे होकर के एल्गी बनी, शंख बने, सिपले बने, मछली बनी. यह जो सारी की सारी जल सृष्टि है वो वहाँ से निर्माण, और उस जल में फिर पृथ्वी का निर्माण. पृथ्वी जो है जो 5वां तत्व है. पृथ्वी के ऊपर खेती, खेती से जितने भी जानवर थे वो और आदमी, ये सब भी उसी में थे. यानी हम जो कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जल है, मित्रों ऐसा नहीं है. जल में पृथ्वी है और जल में जो पृथ्वी है तो जल का जीवन है और उसी जीवन के बाद पृथ्वी पर जीवन निर्माण हुआ. यानी पंच महाभूतों से पूरी पृथ्वी का, हमारा मनुष्य जाति का निर्माण हुआ है, यह जीवन आया. यह जो जीवन हमें पंच महाभूतों से मिला है, यह पंच महाभूतों का जीवन तभी तक स्थिर है, तभी तक अच्छा है जब तक इन पंच महाभूतों में एक हार्मोनी रहती, एक बैलेंस रहता है, एक संयम रहता है. आज पश्चिम के वैज्ञानिकों ने जो टेक्नोलॉजी सिखाई, वो क्या टेक्नोलॉजी सिखाई? तो चाहे जितना यूज करो, चाहे जितना पॉल्यूट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर अब पता लगने लगा कि नहीं,
आप चाहे जितना पॉल्यूट करो उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपने पूरे वायुमंडल को पॉल्यूट कर दिया तो गर्मी फैलेगी। अगर आपने जल को पॉल्यूट करके रख दिया तो पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। अगर आपने हमारी सॉइल्स को, हमारी पृथ्वी को पॉल्यूट कर दिया तो क्रॉप्स के प्रोडक्शन में अड़चन आ जाएगी। हमारी जो जमीन है, हमारी जो भूमि है, उस भूमि में जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो ऑर्गेनिक कार्बन जब रहता है तब आपने अगर यूरिया दिया तो उसको डाइजेस्ट करता है और उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट होते होते हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कम हुआ और जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल हो गई, कन्वर्ट हो गई। इसकी वजह से उसकी जो पानी की होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो कम हुई, लीचिंग बढ़ गया, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा और उसके कारण से यूरिया या जो भी हम केमिकल्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, वो सब के सब जमीन में अंदर जाने लगे। हर साल हमको और बढ़ा करके फर्टिलाइजर देना पड़ता है। यह हमारे किसानों का प्रॉब्लम हुआ कि हम जितना यूरिया इस साल देते हैं अगली बार उससे ज़्यादा देना पड़ता है, अगली बार उससे भी ज़्यादा देना पड़ता है और उस सब के कारण अब फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ गई, सीड की कॉस्ट बढ़ गई, इरिगेशन की कॉस्ट बढ़ गई। अगर ये सारी कॉस्ट बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ा है। ये बात सच है कि हमारा उत्पादन कम हुआ है, ऐसा नहीं। लगभग हमारा उत्पादन स्वतंत्रता के समय से अब तक 6 गुना बढ़ा है, पर उसके बाद भी किसान के हाथ में क्या आता है? तो वो जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन के बाद उसका जो सारा खर्चा है वो खर्चा या तो फर्टिलाइजर में होता है, पेस्टिसाइड पर हो जाता है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के बाद बचता है तो हाइब्रिड सीड में हो जाता है। अब तो जीएम सीड भी आ रहा है सर। अगर जीएम सीड आएगा, टर्मिनेटर सीड आएगा तो इन जर्मिनेटर और टर्मिनेटर सीड से भी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आज भी इतना अच्छा प्रोडक्शन होने के बाद हमारे फार्मर के हाथ में कुछ नहीं आता। जरूरत इस बात की कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे कृषि के विद्यार्थी, हमारे कृषि के जो वर्कर्स हैं वह ये बातें सीखें और उसके बाद हम लौट करके वापस अपनी पंच महाभूत की खेती जो है, जो खेती हमारे पूर्वजों ने सारी दुनिया को दी है, उस खेती पर आए और उस खेती के कारण यह जो पंच महाभूतों का इम्बैलेंस है, यह जो क्लाइमेट चेंज है, इसको एडप्ट करें, इसको फेस करें, इसको कंट्रोल करें और कंट्रोल कर करके हम उसको इस स्थिति में लाएं कि फिर से हमारे किसानों का जो उत्पन्न तो बढ़ा ही है, उत्पादन तो बढ़ा ही है, पर उसके हाथ में इकोनॉमिक रिटर्न्स आना चाहिए, उसके हाथ में पैसा आना चाहिए। मित्रों, मैं जब छोटा था तब भी ये बात कही जाती थी कि सबसे भली खेती, पर आज वैसी बात नहीं। आज सबसे भली खेती नहीं रही है। आज तो किसान खेती छोड़ करके नौकरी ढूंढने गया है। वो कहता है कि मुझे नौकरी दो आप। सचमुच में अगर हम पंच महाभूतों के आधार पर, अपने पूर्वजों की किए हुए कामों के आधार पर हमने खेती को सुधारा, खेती को फिर से बदला और हमने उसी दिशा में हम खेती का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, कम नहीं करना चाहते, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स हैं, उन सब को लेकर के चलें तो मुझे विश्वास है कि हमारी खेती किसानों को भी फायदे से हो। और अगर किसानों को खेती फायदे से होने लगी तो आज जो हमारा कर्म छोड़ करके बाहर जा रहा है खेतों के, गाँव के, वो वापस गाँव की ओर लौटेगा और गाँव और खेती, हमारे किसान का जीवन फिर से सुखरू और सुंदर जीवन बनेगा। और उस सुंदर जीवन में हम सबको भी ये लगेगा कि हाँ, सचमुच में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, हमारा ज्ञान हमारे माँ बाप के, हमारे गांव के लोगों के, हमारे देश के लोगों के काम आ रहा है। सचमुच में शिक्षा तो वही है जो शिक्षा आपके जीवन को भी उठाए और आपके परिवार के और गांव के जीवन को भी उन्नत करे। मुझे विश्वास है कि आप जो एग्रीकल्चर की एजुकेशन लेंगे, उस एग्रीकल्चर की एजुकेशन से आपका, आपके परिवार का, गांव का और इस देश का, सभी का जीवन उन्नत होगा, श्रेष्ठ बनेगा। आप सबने मुझे जो शांति के साथ सुना और आज के इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, उस सब के लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स का और आप सभी का आभार, हार्दिक धन्यवाद।
आपके अद्भुत और प्रभावशाली विचारों के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं सर. Thank you very much for your thought-provoking inaugural address. Now our another member of Board of Regents has just joined us, Shri Y.N. Patil. May I request Dr. Kalapanava, the Assistant Director of Associate Director of Research to